सौ मयुरी नरावार अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। प्रजासेवा भवन येथे कंदिश निवास रेड्डी यांना भेटलेले लोक, अनेक मंदिरांना आर्थिक पाठबळ देणारा युवा नेता। मोठ्या थाटात कैलासनगर हनुमान मंदिर वर्धापन दिन, मंदिरात विशेष पूजा। शाळेमध्ये मोठ्या थाटात पादपूजा कार्यक्रम, विद्यार्थी त्यांच्या पालकांना आरती देऊन आशीर्वाद घेतला। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबाद शहरातील कंदिश निवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस वेगवेगळ्या गावातून येणाऱ्या चाहत्यांनी नेहमी गजबजलेली असते। लोक मानवतावादी कंदिश निवास रेड्डी यांना भेटतात आणि त्यांच्या समस्या सांगतात। कंदिश निवास रेड्डी यांना शक्य तितकी मदत करत आहे। कंदिश निवास रेड्डी यांनी पटणममधील रणदिवे नगर संतोषी माता मंदिराच्या बांधकामासाठी आलेल्या वसाहतींना आर्थिक मदत केली। तामसी मंडळाच्या पोन्नारी येथील नवीन हनुमान मंदिर मूर्तीच्या स्थापनेसाठी त्यांनी आपला भागदान केला। या महिन्याच्या 20 तारखेपासून 7 दिवस चालणाऱ्या श्री भगवत कथेच्या पठणासाठी बजारहुतनूर मंडळ मंजाराराम तांडा येथील रहिवाशांनी कंदिश निवास रेड्डी यांना आमंत्रित केले आहे। आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या आर्ली गावातील गोविंद पटेल यांची परिस्थिती जाणून कंदिश निवास रेड्डी यांनी औदार्य दाखवून त्यांना आर्थिक मदत केली। కమలానికే ఓటేస్తామన్నా, అడుగడుగు నీతోనే తోడుంటామన్నా, కందేసినన్నా ఏ కష్టాలు కన్నీళ్లు రాకుండా చూడాలి నువ్వే సినన్నా। आदिलाबाद जिल्ह्यातील कैलासनगर हनुमान मंदिर 36वा मंदिर वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला। सकाळी विशेष पूजेसह त्यांनी भजन कीर्तन केले आणि भक्तिपर आनंदमग्न झाले। नंतर मंदिर समितीच्या वतीने अन्नदानाचे आयोजन करण्यात आले। मंदिर समितीचे सदस्य व वस्तीतील ज्येष्ठांनी सांगितले की दरवर्षी मंदिराचा वार्षिक उत्सव मोठ्या थाटात पार पडत असून भाविक व वसाहती मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन तीर्थप्रसाद ग्रहण करतात। आम्ही आज सकाळी होमम सोबत विशेष पूजादी कार्यक्रम आयोजित केल्याने त्यांनी नमूद केले। सर्वांच्या सहकार्याने आम्ही मंदिराचा विकास करत असल्याचे त्यांनी सांगितले। दक्षिणमुखी हनुमान स्थापना है मुक्त्यार संवत्सर అవుతున్నది। దాని విధంగా मैं कैलास नगर होमम कलश పూజ అభిషేకం అన్నదానం పూజలతో చేస్తున్నాం। 36 సంవత్సరాలు అవుతుంది కనుక స్థాపించబడి ఈ రోజు వార్షికోత్సవం చేస్తున్నాం। ఈ వార్షికోత్సవం ప్రతి సంవత్సరము చేయడం జరుగుతుంది। ఇక్కడ 2 పూటలు హారతి జరుగుతుంది శివాలయంలో, తర్వాత హనుమాన్ మందిర్లో కూడా। శివాలయంలో వచ్చే శివరాత్రి నాడు అభిషేకాలు గొప్పగా జరుగుతాయి। అయితే భక్తులు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या एका पथकाने आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील रिम्सला भेट दिली। कालिया यांनी रुग्णालयातील सर्व विभागात फिरून रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवांची माहिती घेतली। टीम सदस्यांनी रिम्सचे संचालक जयसिंग राठोड आणि इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधाबद्दल विचारले। रिम्समधील पीजी जागा मंजूर करण्यासाठीच या टीमने आदिलाबादला भेट दिल्याचे दिसते।
आसाराम बापू आश्रमाच्या प्रशासक अलका यांनी सांगितले की पाश्चात्य प्रवृत्तीकडे न जाता संस्कृती आणि परंपरा जपल्या पाहिजेत आणि जन्मदात्या आई वडिलांची पूजा केली पाहिजे। 14 फेब्रुवारी रोजी आदिलाबाद शहरातील एका खासगी शाळेत मातृपितृ पूजन दिवस आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी शाळेतील मुलांनी व विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांचे पूजन केले व त्यांची प्रदक्षिणा करून आशीर्वाद घेतले। ते म्हणाले की आई वडिलांचा आदर करणे आणि त्यांची पूजा करणे हा आपल्या संस्कृतीचा एक भाग आहे। ప్లేట్ నందరూ కూడా తల్లిదండ్రుల పైన పెట్టుకోండి। వారి ఆశీర్వాదం పొందాలి ఫలితం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది। ఆ తర్వాత అమ్మా నాన్నలకు की पहचान भारत के संस्कार और संस्कृति से है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारे देश का संस्कार है। आज की युवा पीढ़ी दिव्य संदेश को एक मार्गदर्शन के अभाव में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर ये संदेश को भूलता जा रहा है। सनातन हिंदू उत्सव समिती सदस्य आणि माजी सैनिकांनी सांगितले की अमरांचे बलिदान हे अगणित आहे। उत्सव समितीच्या वतीने पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। आदिलाबाद शहरातील विनायक चौकातील महापालिका उद्यानासमोरील हुतात्म्याच्या स्तूपावर पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली। अनेकांनी जवानांच्या सेवेचे कौतुक केले। देशाच्या रक्षणासाठी सैन्यात भरती होण्यासाठी तरुणांनी पुढे यावे असे आवाहन त्यांनी केले। सर्वांनी हुतात्म्याच्या बलिदानाचे स्मरण ठेवावे असे आवाहन त्यांनी केले। भारत माता के यहाँ सब इकट्ठा हुआ सभी को मालूम ही है। इस 14 फरवरी के दिन पुलवामा में जो उग्रवादियों का अटैक हुआ और उससे उसमें तकरीबन 44 जवान अपने देश के लिए शहीद हुए। इसलिए आज 14 फरवरी को उनकी यादगार के लिए ये 14 फरवरी शहीद के दिन से माना जाता है। 14 ఫిబ్రవరి మనం ఈ రోజుని మర్చిపోని దినం। ఎందుకంటే మన ఆర్మీ సోదరులు పుల్వామా దాడిలో దాదాపుగా 42 మంది అమరవీరులుగా అయినారు। ఈ పుల్వామా దాడిలో ఏదైతే దొంగ దెబ్బ తీశారో ఉగ్రవాదులు వారిని మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన దేశం విడిచిపెట్టదు, వెంటాడి వాళ్ళని नाशनम చేస్తుంది। आदिलाबाद नगरपालिकेच्या कार्यालयात नगरपालिकेच्या सभागृहात आयोजित सार्वजनिक अधिकाऱ्यांची सभा वाया गेली। बल्दिया आयुक्त शैलेजा वरंगल येथील सभेला गेल्याने जनतेत गैरहजर होत्या। शिवाय इतर अधिकारी नसल्याने शहरातील जनता कंटाळलेली दिसत होती। शहरातील विविध वार्डातील याचिकाकर्त्यांनी उपलब्ध अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन हताश होऊन पाठ फिरवली। प्राप्त अर्जाची तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ते सोडवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले।
आपली संस्कृती आणि परंपरा खूप समृद्ध आहे आणि कार्यक्रम अशा प्रकारे आयोजित केले पाहिजे जेणेकरून ते विद्यार्थी स्तरावर मुलांना समजतील, असे आसाराम बापू आश्रमाच्या व्यवस्थापक अलका यांनी सांगितले। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील श्री सरस्वती शिशु मंदिर शाळेत पालकांसाठी पादुका पूजनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला। शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांची पूजा करून प्रदक्षिणा घातली। त्यांचे आशीर्वाद घेतल्यानंतर पालकांचे मोठेपण दाखवण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले। तसेच पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांसाठी मौन धारण केले। अपने अपने माता पिता को याद करें। ओके और विद्या बढ़ती है। हमारे पैर पर खड़े करने के लिए माता पिता ने अपना योगदान दिया। वो आज हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होके दिन ब दिन हम हमारा उद्देश्य भूलते जा रहे हैं। हम हमारे जीवन का कर्तव्य, हमारे माता पिता का कर्तव्य, हमारे देश के लिए हमारा कर्तव्य आज हम भूलते जा रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होके हम हमारा सनातन संस्कृति से दूर होते जाते हैं। बेला मंडळ येथील चपराळा जिल्हा परिषद हायस्कूल येथे आरोग्य मेळावा घेण्यात आला। प्रत्येकाने आरोग्याबाबत जागरूक राहावे या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या वतीने महत्त्वाकांक्षीपणे हाती घेतलेले आरोग्य मेळावा या प्रत्येक महिन्याच्या 14 तारखेला आयोजित केला जातो। यावेळी जिल्हा परिषद हायस्कूलच्या मध्यस्तरीय आरोग्य प्राध्यापिका निकिता यांनी विद्यार्थ्यांना शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या खंबीर बनण्याच्या उद्देशाने सायकलिंग करून दिली। यावेळी वैद्यकीय व्यावसायिक निकिता म्हणाल्या की केंद्र सरकार प्रत्येकाला शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या मजबूत करण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहे। ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करणेही महत्त्वाचे आहे। यावेळी विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक स्वच्छता सोबत जागरूक करण्यात आले। తర్వాత నాగున్ అంగోటే ఇట్లా రెండు థమ్స్ ఇట్లా చేయాలి। ఫస్ట్ సీదా తర్వాత ఉల్టా సరేనా। అనేమియా ముక్త్ భారత్ అంటే అనేమియా అంటే ఏంటి? ఐరన్ తక్కువ ఉండడం, బ్లడ్ తక్కువ ఉండడం। దానికోసం మీకు మేము వచ్చి వారం వచ్చి మీకు ఐరన్ టాబ్లెట్లు ఇస్తున్నాం కదా। ఏం చేస్తున్నాము? వ్యక్తిగతంగా మనం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి। మేమే కాదు మీరు ఉండాలి, అందరూ ఉండాలి। మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా అది మీ దగ్గర ఎక్కువ మంది లేకుండా కాబట్టి తొందర అయిపోయింది। నెక్స్ట్ టైం నుంచి అయితే ఏ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినా కూడా మీరు అందరు పార్టిసిపేట్ ఓకేనా। ఇప్పుడు మీరు అందరూ సైక్లింగ్ చేయండి, వీడియో ఈ రోజు మనం ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు స్టార్ట్ చేసిన పథకం ప్రకారం హెల్త్ మేళా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। మన థీమ్ వచ్చేసి సైక్లోథాన్ అంటే మనం సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల మన బాడీకి ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది, ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే దాని ప్రకారం మేము విలేజ్ లెవెల్లో కానీ స్కూల్ లెవెల్లో కానీ ఇది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। దానికి స్కూల్లో ఉన్న పిల్లల చేత సైక్లింग చేయించాము। जैनत मंडळातील अंकोली गावातील नैथम बाबाराव 30 वर्ष मजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करत होते। 2 किडन्या निकामी झाल्याने त्यांच्यावर काही काळ रिम्स रुग्णालयात उपचार सुरू होते। याची माहिती मिळाल्यावर जैनत मंडळ प्रधान संगमच्या अध्यक्षांनी गंगाप्रसाद पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर 2 दिवसांनी त्यांना आर्थिक मदत करून त्यांचे औदार्य दाखवले। बाबारावांना पत्नी, 2 मुले आणि 1 मुलगी आहे,
परवडत नसल्याने हे कुटुंब सरकारी रुग्णालयाच्या चक्रा मारत असल्याची परिस्थिती आहे। त्यामुळे बाबारावांची परिस्थिती समजून घेऊन आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून कुटुंबातील सदस्यांनी विनंती केली की देणगीदारांना गुगल पे क्रमांक 9959921116 नाव नैतम भास्कर, SBI अकाउंट 353407325562, IFSC SBI N 0006644 रुग्णालयातील उपचारांसाठी आर्थिक मदत करावी। నైతం బాబారావు నాగోరావు ఈయనకు డయాలసిస్ ప్రాబ్లం ఉంది, 2 కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయినాయి। ఆయనకి నైత కుటుంబానికి నాగోరావు కుటుంబానికి ఆయన పెద్ద దిక్కు కాబట్టి మేము ప్రధాన సమాజం నుంచి ఇలా వచ్చి ఆకులికి వచ్చి మా జన మండల్ ప్రధాన సంఘం నుంచి వచ్చి మాకు తోచినంత సాయం చేస్తున్నాం। కాబట్టి ఆయనకు తగినంత మెరుగైన చికిత్స కోసం ప్రతి దాతలు ప్రతి విలేజ్ నుంచి ప్రతి ప్రధాన సమాజం నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక్క రూపాయి జమ చేసైనా కానీ దానికి సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित क्रीडा व सांस्कृतिक वर्धापन दिन सोहळा बेला मंडळातील स्थानिक खाजगी कार्यक्रम सभागृहात करण्यात आला। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महाविद्यालयाचे प्राचार्य सूर्यप्रकाश यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधीसह दीप प्रज्वलन केले आणि पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांसाठी 1 मिनिट मौन पाळले। नंतर महाविद्यालयाचे प्राचार्य सूर्यप्रकाश यांनी महाविद्यालयाच्या प्रगतीविषयी माहिती दिली। महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले। महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी चांगले कलागुण दाखवून राज्यस्तरावर मानांकन मिळवत आहे ही अभिमानाची बाब आहे। या कार्यक्रमात बेला मंडळाच्या लोकप्रतिनिधींनी आपला मोलाचा संदेश देऊन विद्यार्थ्यांना अधिक प्रेरित केले। त्यानंतर महाविद्यालयात आयोजित क्रीडा स्पर्धेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आले। यावेळी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले नृत्य पाहून अनेक जण प्रभावित झाले। యువత అంటే ఈ టీనేజ్ అందరూ కూడా యువత అందరూ కూడా ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో పాల్గొనాలి। తెలుసుకుంటాం। నాకు 3 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది, కానీ నేను యూట్యూబ్ ద్వారా గూగుల్ ద్వారా సెర్చ్ చేసుకుంటూ మంచి ఆధ్యాత్మిక మంచి హైటెక్లో వ్యవసాయం చేపిస్తూ సంవత్సరానికి 10 లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాను। ఇద్దరు ఆడపిల్ల మగపిల్లడు। ఇలా శ్రీనివాస్ అనే కొడుకు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు। చదువుతో పాటు యోగాలో కూడా రమిస్తూ వారి తల్లిదండ్రుల పేరుని నిలబెట్టినాడు। केंद्रीय जल ऊर्जा आयोगाचे टीम सदस्य एन श्रीनिवास यांनी मंगळवारी तेलंगणा राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षीपणे बांधलेल्या कोरटा चनका बॅरेजच्या कामाची पाहणी केली। बॅरेजला पुरस्कार मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय जलविद्युत आयोगाकडे अर्ज करण्यात आला आहे। केंद्रीय जलशक्ती सदस्यांनी पूर्ण तपासणी करून समाधान व्यक्त केले। त्यात DRDA PD किशन, ट्रेनी कलेक्टर श्रीजा जैनत, MPDO गजाननराव आणि पाणी निचरा अधिकारी यांचा समावेश आहे। विश्व हिंदू परिषदेच्या सदस्यांचा व्हॅलेंटाईन डेवर बहिष्कार। बेला मंडळ येथील स्थानिक शिवाजी चौकात विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने
पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या चित्रांना श्रद्धांजली वाहिली जात नाही। यावेळी बेला मंडळ विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी भाषणे झाली। 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे साजरा करणे ही आपली भारतीय संस्कृती नाही असे ते म्हणाले। 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी घडलेली पुलवामा घटना ही देशाला अश्रू अनावर करणारी घटना होती। दहशतवादी आत्मघाती हल्ल्यात प्राण गमावलेले 43 CRPS जवानांनी व्हॅलेंटाईन डे रद्द करण्याची आणि 14 फेब्रुवारीला वीर जवान दिन म्हणून साजरा करण्याची मागणी केली। माता की जय, माता की जय। ఫిబ్రవరి 14 వ్యాలంటైన్ డే జరుపుకోవద్దని బజరంగ్ దళ్ మరియు విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో యువతి యువకులకు హెచ్చరిస్తున్నాం। అదేవిధంగా 2019 14 ఫిబ్రవరి రోజున పుల్వామా దాడిలో 40 మంది జవాన్లు అమరులైన రోజున కాబట్టి ఈరోజు మేము ब्लैक डे पूर्व दिनाన్ని पुरस्कరించుకొని 2 निमिषाలు मौనం पाटिंची। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। प्रजासेवा भवन येथे कंदिश निवास रेड्डी यांना भेटलेले लोक, अनेक मंदिरांना आर्थिक पाठबळ देणारा युवा नेता। मोठ्या थाटात कैलासनगर हनुमान मंदिर वर्धापन दिन, मंदिरात विशेष पूजा। शाळेमध्ये मोठ्या थाटात पादपूजा कार्यक्रम, विद्यार्थी त्यांच्या पालकांना आरती देऊन आशीर्वाद घेतला। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।